Yes, today our maths series 4. Here we discuss more questions of mathematics for competition level and hopeful that you are following this video very seriously to crack your technical exams. Okay, our first question is today is tan 65 degree upon tan 25 degree. Find the value of this. Tan 65 degree upon tan 25 degree. Here we apply the formula of quadrant. Tan 90 degree minus theta means theta is there 25 degree. How we get 65? 90 minus 25. If we do upside, then do lower side. Okay, there is cot. There is cot. Tan 90 minus theta is equal to cot 25 degree and same cot 25 degree. But answer is 1. Means our C option is right. Always remember this. There is more mistake in the question paper of UP GCAP question paper. Then make your mind to do correction on self. Now second question is, if in the right angle triangle ABC, angle B is right angle. First we draw a right angle triangle. Here B is right angle, A and C. Tan A is equal to 1 means perpendicular upon base. Perpendicular is 1 and base is 1. For tan A, perpendicular is this. This is 1. Base is also 1. What is hypotenuse? By Pythagoras you will get it. AC square is equal to AB square plus BC square. 1 square plus 1 square. This is 2. Then AC is root 2. Then find the value of what? 2 sin A into cos A. 2 sin A. Sin A is perpendicular upon hypotenuse and cos A is based upon hypotenuse. Then 2 is perpendicular is what? For A angle. For A angle perpendicular is this 1 upon hypotenuse is same root 2. Base is 1 for A angle. Base is 1 upon hypotenuse root 2. 2 upon 2. This is 1. Means our C option is right. You can find all the formula of trigonometry in my previous YouTube video. Given also the link in my description. Third question is the angle of altitude of 10 meter high house from the point P. Here is a house. There is a point P. From there the angle of elevation is 30 degree. A flag is hosted at the top of the house. Now a flag is hosted top of the house. From the top of the flag, the same point make the angle equal to 45 degree. Then find out what is the height of the flag. A, B, C. First we find this base and take the triangle BCP. Triangle BCP. Perpendicular upon base is the relation for tan. Tan 30 degree is equal to tan upon PC. Tan 30, 1 upon root 3. Tan upon PC. Then PC is equal to tan root 3. Take triangle ACT. Here AC upon PC. Same for tan 45 degree is equal to AC upon PC. AC is x plus 10 upon PC is now tan root 3. Tan 45 is equal to what? 1. Tan root 3 cross multiplication x plus 10. X plus 10 is equal to tan root 3
3 and x is equal to 10 root 3 minus 10. There is 10 common, root 3 minus 1. We know the value of root 3 because the answer is all in point. So root 3, 1.732. Put the value of root 3 there. 10 into 0.732. You will get the answer 7.32 meter. This is the height of the flag. Means C option is right. Is a person on 8,000 rupees from the bank for 2 years at a rate of compound interest 5%. एक person ने 8,000 rupees earn किया. Means that is the principal. For how much time? For 2 years. For how much rate? That is a compound interest rate, compoundly 5%. So what is the amount? That is, there is the formula. Amount is equal to principal into 1 plus R upon 100 whole n. The principal is 8,000 rupees. 1 plus rate is 5% and the time is 2 years. Now solve it. Totally multiply this, you will get the answer 8820. Means A option is. Now our fifth question is, a owner of a factory estimate that her machine depreciate by 15% of its value of the beginning of the year. एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का ऑनर है जिसने ये बताया कि उसकी मशीन जो है, जो फैक्ट्री को चलाने के जो मशीन यूज करता है, वो हर साल 15% डेप्रिशिएट हो जाती है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. अगर सेकेंड ईयर में उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू 5,355 है, तो बताइए कि व्हाट इज इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन इज. क्या थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू जब उसने परचेस किया था? तो लेट्स सपोज हमने कर लिया यहाँ पर, लेट्स सपोज उसकी ओरिजिनल वैल्यू x थी. फर्स्ट ईयर उसका डेप्रिसिएशन हुआ x का 50% हम फाइंड अप करेंगे. means 0.15x. Then at the end of फर्स्ट ईयर के एंड में जो मशीन की वैल्यू थी बची, लेफ्ट बची, वो कितनी बची? x माइनस 0.15x मीन्स 0.85x. नाउ सेकेंड ईयर अगेन डेप्रिसिएशन इज 15%. देन डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड ईयर कितना हो गया? 0.85x इंटू 15%, विच इज इक्वल टू, जो कि आपको दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 5,355. 5,355. Then what is the original value? 5,355 into 100 upon 0.85 into 15. 15. When you solve it, you will get the answer 42,000. Means your B option is right. Now our sixth question is, a shopkeeper sells an article at its marked price of 7,500. एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल पे मार्क प्राइस कितना लगा रहा है? 7,500 रुपीज, और उसके ऊपर वो सेल टैक्स चार्ज कर रहा है 12% फॉर द कस्टमर के लिए. इफ द शॉपकीपर पे अ वैट ऑफ, अगर शॉपकीपर ने खुद वैट चार्ज 180 रुपीज अगर पे किया है, तो बताओ कि शॉपकीपर ने टैक्स के साथ कितना पे किया है. शॉपकीपर ने जब उसको परचेस किया तो उसने कितना पे किया? तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें सेल टैक्स निकालना पड़ेगा. कस्टमर ने कितना पे किया? 7,500 इंटू 12%. When we solve it, here we get 900 rupees. तो वैट जो चार्ज शॉपकीपर ने दिया है, वो टोटल वैट चार्ज में से, टोटल टैक्स में से जो उसने एक्चुअल टैक्स निकाला है वो कितना है, वो हमें फाइंड करना है. देन x इज इक्वल टू 900 माइनस 180, मतलब दैट इज द एक्चुअल टैक्स, जो एक्चुअली टैक्स है. और ये एक्चुअल टैक्स कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस का 12%, जो कि सेल टैक्स है. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 720 इंटू 100 अपॉन 12.
जीपी इज 6,000 रुपीज, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ा, कॉस्ट प्राइस उसका पड़ा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्लस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी इसमें लेना है, तो टैक्स उसका 720 है प्लस कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 6,000 का, तो टोटल पेड बाय द शॉपकीपर इज 6,000 plus 720. That means 6,720 rupees he paid. That means which option is right? A option is right.